हमारे बीच में बहुत सारे विशिष्ट लोग यहाँ पे आए हैं। आप सभी लोगों का संभवम आईएएस की तरफ से हृदय से स्वागत है। इंडिया दिल्ली फाउंडेशन की तरफ से हृदय से स्वागत है। कुछ लोग इसमें इस बार पहली बार आ रहे हैं, जैसे हमारे मनीष झा सर आ रहे हुए हैं। हम लोगों के बहुत प्रिय हैं मनीष झा सर, जो इस समय वर्तमान में आईएफएस के रूप में पोस्टेड हैं देहरादून में, और अपने इस संभवम से बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहे हैं, अटैच रहे हैं। उनका स्वागत है। बहुत सारे और मेंटर्स भी जो यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी स्पर्श चौधरी जी आई हैं। सभी लोगों का स्वागत हम करते हुए बताना चाहते हैं कि यह अभियान जो हमने स्टार्ट किया हुआ है संभवम ने, एक अपनी तरह का अलग सा अभियान है। इसके माध्यम से हम अपने संभवम के छात्रों के अंदर या यूपीएससी एस्पिरेंट्स के अंदर या जो के अंदर एक विशेष जो व्यक्तित्व में जो निखारता आना चाहिए, जो निखार आना चाहिए, उसको उभारने का प्रयास करते हैं। और ये अभियान इसीलिए स्टार्ट किया गया ताकि हमारे अंदर विषय पर बोलने, समझने, हमारी समझ विषय पर पैदा हो और उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए। आज यहाँ पे करते हैं, कल हमको इंटरव्यू में करना पड़ेगा, तो भी हम लोग टॉपिक पर और प्रश्न पर कैसे फोकस्ड रहें। प्रश्न जो पूछा जाए हम लोग कैसे उस पर ही कंसंट्रेट करें, अपना हमारे रिप्लाई उस पर बिल्कुल हमारे प्रश्न का उत्तर जरूर हो। कैसे हम प्रश्नों को सुने, समझें और जवाब दें, इन सब का अभ्यास करने के लिए यह प्रारंभ किया गया है। हमारे बीच में बहुत सारे मेंटर्स भी हैं, हमारे सारे ऑडियंस भी रहेंगे, इसमें बच्चे लोग रहेंगे जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी सभी लोग अपने अपने बाद में इनपुट भी देंगे, अपने प्रश्न भी करेंगे, बाद में अपने इनपुट देंगे कि किस पार्टिसिपेंट ने कहाँ पर अच्छा किया, कैसे कैसे और सुधार की आवश्यकता है। अपने इनपुट भी देंगे और अपने सुझाव भी देंगे कि कैसे आप इसको और अच्छा पकड़ सकते हैं, फोकस कर सकते हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यू में अपीयर होने वाले कई सारे बच्चे इसमें हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे मेंटर्स और का विशेष ध्यान उन पर रहे कि ताकि ये इनका अभ्यास एक प्रकार से मॉक इंटरव्यू की ना होकर के एक अलग सा इनका अभ्यास कराया जा रहा है। तो आप लोग अपने जो फीडबैक देंगे, अपने जो सजेशंस देंगे, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए करेंगे। ये अपना जो उद्देश्य है, उद्देश्य आपको बता दिया कि हम इंटरव्यू के लिए या जो भी हमारी तैयारी होती है उनको कैसे प्रस्तुत करें, इसके लिए हम लोग करते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं, और इस आशा के साथ, विश्वास के साथ कि हमारा आज का यह डिस्कशन एनालिसिस प्रोग्राम जो होगा, ये अपने उद्देश्य को पूरा करेगा, इसके साथ चलेगा और सभी लोग इसमें अपने सार्थक इनपुट और अपने जो सुझाव हैं उसको देंगे। धन्यवाद। ओवर टू वात्सल्य जी। Okay, thank you, Uncle. So, before starting this session, आज के participants को और आज की jury को introduce कर देते हैं सबसे पहले. So, for jury we have Manish Jha sir, four-time interview appeared. He's an IFS he's an IFS Forest Service currently posted in Dehradun, mentor and guidance in Sambhavam IAS. Sparsh Chaudhary ma'am, mentor and guidance at Sambhavam IAS. She's also a column writer and a podcaster also. Dinesh Rajpurohit sir, assistant professor, Delhi University, interview appeared, mentor in Sambhavam IAS. Saima Faraz ma'am, interview appeared, educator, mentor in Sambhavam IAS. Shri Anil Srivastav sir, director, Sambhavam IAS and director, Dear Delhi Foundation also. Shri Akhilesh Kumar sir, director, initiative and academic in Sambhavam IAS. So today we have participants, Manjesh Kumar, चंद्रमणि कुलू, सेजल आर्या, सेजल मेहरा, अमान अहमद, मोक्ष तालुजा, सुहानी पुरी, विपुल संतोषी, उज्जवल मंडल, आरती शर्मा, सम्राट दत्त अंगरके, कुनिका, मधुर शाक्य, सोनिया गुप्ता मैम, शाश्वत, रोहन, सुधांशु एंड हरमेंद्र। तो आज के हमारे ये पार्टिसिपेंट्स हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। भारत का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है, वो देश के आर्थिक आकार और विकास को एक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इस लक्ष्य का उल्लेख पहली बार 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, जिसमें भारत को वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन जीडीपी हासिल करने का लक्ष्य प्रदान किया गया था। The term $5 ट्रिलियन इकोनॉमी
refers to the economic goal set by the Indian government to reach a gross domestic product of 5 trillion economy. This ambitious target aims to transform India into a global economic powerhouse and improve the living standard of its citizens. 2019, during his Independence Day speech, Prime Minister Narendra Modi announced the vision of making India a $5 trillion economy. This goal was set to boost economic growth, create employment opportunities, and attract foreign investment. So before starting this session, I would like to call Sonia ma'am to please put some light on the topic which I have discussed today, $5 trillion economy. Ma'am, Just, please, over to you. Good morning, everybody, to this event which aims to give you information holistically upon economic issue today. And welcome to this event. So today's event is $5 trillion economy. Will India be able to achieve it? What is the goal? Why this goal? Everything we are going to discuss. So before going into detailed questions, I would like to just give a brief about the topic. Now, why 5 trillion economy? Is this our goal? Or is this the end which we want to achieve? Definitely, it is not the end, right? It is just a means to achieve it. So it's a short-term goal which we have to achieve, which government aim to achieve till 2024. So what is the long-term goal? So long-term goal is to achieve $30 economy by 2047. That is 100 years of Indian independence. Currently, we have per capita income of about $2,400. Now, the goal is to achieve that to $18,000. So, 5 trillion economy was a short term goal to be achieved so that the complete resources of the country aims in that direction. Goals in that direction, whether it is land, whether it is capital, whether it is human resources, or whether it is entrepreneurship. So the goal was to direct the resources of the nation into that short-term goal, and consequently, which will help us to achieve the long-term goal. So this is the gist about the topic, sir. Okay, thank you, ma'am. I would like to ask, I would like to invite Saima ma'am. Is there any question? Hi, Sonia ma'am. Hello, ma'am. It's the goal was set for 2014, 2020, 24, right? 2019 it was started in 2019 and it was to be achieved by 2024. But can you please tell me what is have we achieved the goal yet, or what is the present GDP right now? Ma'am, as per latest estimates, the GDP is accounted at 3.9 trillion dollars up to 2024 uh, financial year. So we have not achieved the targets. Definitely, we have not achieved, and we are on the way to achieve it. Okay, and what's India's rank as per the GDP ranking of the world? Ma'am, as per the GDP ranking at nominal exchange rate, we have the ranking of fifth. We are the fifth largest economy. However, at per PPP terms, we are at third largest economy. And what has been the biggest cause that we have not achieved this target? Ma'am, as we have discussed, the goal was announced in 2019. However, the unpredictability due to COVID has slowed down the complete economic process, which lasted for almost 2 years, and the complete economic targets we were not able to achieve. However, we diverted our resources to health, which led to less capital infrastructure in terms of economic goals, other economic goals. So this is one of the main reason. After that, we have geopolitical events which led to uncertainty, like Ukraine crisis and recent Middle East crisis, which increased the inflation and led RBI to increase their repo rate, reducing the financial credit to the complete infrastructure, which led reduced investments, and hence we lagged in achieving these targets. Okay. That's it. Thank you. Good. Thank you, ma'am.
Okay, Sunil, I have a question. What are the challenges to which are coming in achieving the $5 trillion economy? So recently, the challenges which we are facing from the past 5 years, first is the COVID, the diversion of resources, lack of trust of the investors in the economic process. Then were the geopolitical consequences of Ukraine, Gaza crisis, and recent during the trade war, even we have diverted the resources. We have put caps on or limited the investments from China, which time to time even finance ministry has pointed out. Another important aspect is in 2024, again, we had the elections. And during elections, it is normal that we somehow there is reduced investments in the nation due to unpredictability of the government policies in the future. So the continuous every year one on the other factor led to less investments. Okay, thank you, ma'am. So, Manjesh Kumar, are you here? Manjesh, are you here? Okay. Aman, 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 are you here? Hello, hello. Yes, sir. Okay. So tell me something. What are the consequences regarding $5 trillion economy? Sorry. Uh, Are you सर हिंदी में comfortable in बता Hindi or सकते हैं? English? हाँ जी, हाँ हिंदी जी, हिंदी जी, जी, जी. मैं सवाल दोहराऊं हिंदी में. जी 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 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का जो गोल निर्धारित किया गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसको अचीव करने जी के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी सरकार ने अपनाई है? जैसे कि कह सकते हैं मेक इन इंडिया यूज स्टार्ट किया है, स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया है। इससे हमारा जो औद्योगिक विकास करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की केंद्र की रणनीति है वो जो स्टार्ट की है। इन सब माध्यम से भी होता है। मतलब हम पहुंच सकते हैं अपनी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक। और जो आपका जैसे लघु एमएसएमई वगैरह है तो इन सब में भी ध्यान दे रहे हैं, तो ये भी हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने में हमें सहायता करेगा। और जो हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हम बना रहे हैं, इससे हमारे औद्योगिक विकास में तेजी आएगी, क्योंकि जब हमारे रोड अच्छे होंगे तो कंपनियां जो बाहर से आएंगी निवेश करेंगी। अमन, और अमन, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना जी सर, वीडियो ऑन कर लें, इफ कंफर्टेबल. जी 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 सर फोटो आ रही है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आवाज आ रही है. तो यही सारी बातें हैं। और जैसे कि कानून व्यवस्था एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कोई भी जो विदेशी कंपनियां कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने आएगा तो उनके लिए एक स्थिर सरकार और एक इस कानून व्यवस्था अगर सही होगी तो अच्छे जो इन्वेस्टर्स होंगे वो हमारे क्या बोलते हैं मोटिवेट होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं तो कोई नहीं आएगा। और चौथी बात यह है कि हमें हरित अर्थव्यवस्था जो है हमारी, क्योंकि हम भारत जो है शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, तो हम हरित अर्थव्यवस्था पे अगर बढ़ावा दें, इसके लिए भी हम जैसे डिजिटलाइजेशन का यूज करें। जो हमारे गांव में आज भी किसान वगैरह होते हैं, तो इतना, मैं भी गांव में ही रहता हूँ, तो देखते हैं कि इतना नई टेक्नोलॉजी का उनको कोई ज्ञान नहीं है और वो कुछ नया नहीं सीखना चाहते हैं। जो पुरानी जो परंपरागत कृषि की तरीके हैं उन्हीं पे आधारित कृषि कर रहे हैं, और कुछ नया सीखने का कोई स्कोप है नहीं। तो इस पे भी अगर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत बेहतर कर सकता है, हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि हम अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के चक्कर में पर्यावरण को भी ना भूलें। थोड़ा अपने जो पर्यावरण है उसको साथ में लेके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, सतत विकास की तरफ बढ़े, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने रिसोर्सेज को भी सुरक्षित रख सकें और
ठीक है अमन, हम आएंगे नेक्स्ट राउंड की तरफ, तो फिर आपको इनवाइट करेंगे। जी शाश्वत, Vakil शाश्वत sir, आर यू? can I come in just for a minute? हाँ हाँ सर, कंटिन्यू प्लीज। For all the candidates who are appearing, no, please focus on the question. And second, use government schemes while you are replying. Don't say कि ये हो जाएगा, government लघु में काम कर रही है. Don't, I mean, use generic words. You are going to be civil servant. And third, use the words carefully. For example, Manjesh ने कहा किसान वगैरह. Don't, I mean, sound. This is not informal talk, right? फिर आपने कहा कुछ नया सीखने का स्कोप नहीं है कृषि में. Don't use those things. No, what you speak, be mindful. Every words matter. So, in a nutshell, be professional. Be a bit careful what you are using. Words matter. Remember, and use government schemes whenever you say कि government is doing some work in so and so sector. Use government schemes to justify at least one you can say. Okay, go ahead. Okay, thank you sir. Shashwat, are you here? Yes, sir. Good morning, sir. So Shashwat, the question is that ki to achieve, are you comfortable in English or Hindi? English, sir. Okay, so to achieve the $5 trillion economy, the Indian government has identified some key sectors that have potential to drive the economic growth. So can you please put light on what are that, what key sectors are that? Okay, sir. First sector government has identified is, according to me, sir, is infrastructure. In robust infrastructure, so to meet the demands of India's present needs. Recently, government has allocated 11.11 lakh rupees for the 2024-2025 financial year, under which a number of expressways and highways are being created for broader connectivity. Apart from that, we are also creating digital public infrastructure with the UPI and JAM Trinity and Universal Lending Interface ULI. So with these two infrastructure and digital public infrastructure, we are also entering into uh, in trade agreements with other countries for better market. Apart from that, we are also incorporating technologies. So in recent with Digital India Mission, we are trying to as we could not compete in industrial 1.0 2.0 with other countries, but with this industrial 4.0, with knowledge based and tech industries, we are able to we are competing with the global market, as our service sector also gaining importance, as it is contributing around 45% of GDP. So apart from this, sir, I think another sector is energy, where sustainable energy sources in with investment in green energy, we are spurring the demands we are trying to meet the demand of our middle class energy needs. Apart from that, sir, another sector can be this health infrastructure we are creating, so that with Ayushman Bharat Yojana and such and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, we are trying to provide insurance to the vulnerable sections and creating primary health care infrastructure, and also providing secondary and tertiary health benefits. So with all this, government is trying to meet up its target of becoming $5 trillion economy in the line of Viksit Bharat. That's all. Thank you, sir. Okay, Shashwat. Manish sir, any question for Shashwat? No, I appreciate few things of him. He used some of the government schemes, which is very nice. At the same time, he used one wrong figure, that 11.1 lakh rupees. Look at it. Lakh crore. Right. Oh, sorry. Yes. And then remember what is the composition of India GDP?
nearly 60% of our GDP is generated by the demand. So to push the GDP up to 5 trillion, we have to also generate the or sustain the momentum of the demand in the economy. For that, what the government is doing, they're pumping money into the rural economy. What is that? PM Kisan, MG Narega. Then several states are providing money to the women monthly. That Jharkhand Wale scheme, then Grih Lakshmi scheme, right? So that demand component also keep in mind. Then job creations. Do not miss that. Infrastructure post, digital post, very fine. Then what are doing for the industrial growth? That startup India. Overall, nice. Thank you. Okay. Nitin sir, any question for Shashwat? Hello. Hi, Shashwat. Please continue because my net went off, so I couldn't hear much from the Shashwat. So, meanwhile, I will connect and I will ask a question. You can pass on the question to someone else right now. Okay. Sparsh ma'am, any question for Shashwat? शाश्वत एक सवाल है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो हम सरकार ने लक्ष्य रखा है, ये भारत को क्यों चाहिए? और थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा कि हमारे जो दशकीय जो हमारे गोल्स हैं या हमारी जो अर्थव्यवस्था की, हमारे समाज की, देश की जरूरतें हैं, उनको लेकर क्यों चाहिए? हम इससे क्या अचीव करने वाले हैं? ये आप बताइएगा। Thank you, ma'am. India has an aspiration to become a developed country by 2047. To do that, we need economic resources. In line of that, we are moving to become a $5 trillion economy. We have set this target, and we are already the one of the fastest growing country in the world. And with fastest growing country and having these many resources, we can diversify our resources and distribute to the population, as we already have a large number of people under below poverty line. For example, recently, as per Niti Aayog some report, about 11% population is under poverty, below poverty, which I although decreased from earlier previous 21% as per Tendulkar committee report. So with greater resources, India will be able to take money below the poverty to the above. Apart from that, with the greater economic force comes diplomatic heft also. So India will be able to put its influence in global major policy decisions. Apart from that, for a sustained democracy, economic force is also needed because if a country always keeps remains in economic slowdown, then it cannot grow politically also, as seen in India's neighbor Sri Lankan crisis and Bangladesh crisis. Apart from that, further for sustainable development also we need economic growth. With economic growth, we can also cater to our environmental needs also. For that, all these logics, I think, will help me in becoming $5 trillion. Thank you. Let's go to next. Okay, thank you. So before continuing the session, हमारे बीच में आशीर्वाद सर भी हैं. आशीर्वाद सिंघल सर, the renowned nation fame faculty of current affairs and economics. Welcome in the session, sir. So moving to the next participants, Rohan, are you here? Rohan, are you here? Okay, Sudhanshu. Sudhanshu, are you here? Yes, sir. Yes. Okay, Saima ma'am, any question for Sudhanshu? Sudhanshu, I have one question. As Shashwat has said that sectoral focus has been on infrastructure and health and energy sectors.
other than those factors, other than those sectors, what other sectors need the focus? Mainly, what other sectors are there? Ma'am, apart from infrastructure and health sector, I think we need to focus on digital infrastructure also, digital economy and fintech. It comes under the infrastructure only, na? The main sectors like agriculture or manufacturing sector or service sector. Right, Agriculture, so for agriculture sector, government is also aiming in the 5 trillion economy. Government is also aiming for 1 trillion economy to directly come from agriculture sector, as majority of our population is going towards agriculture for its occupation. So, mention the facts like around 50% population are employed in agriculture sector, and it contributes around 18%. 18% of the GDP, right? So currently, around 50% of the population is from pre-COVID era of 40, where 45% of the population used to work in agriculture sector. Currently, after COVID-19 pandemic, around 50% of the population is employed in agriculture sector, which is contributing only 18% of the GDP. And the government is aiming to improve it to contribute to $1 trillion of the economy in $5 trillion economy of its target. By 2027, in its further targeting, where it is further targeting it, and secondly is, ma'am, it is government is also targeting in its climate action, where it is aiming for 450 gigawatt of renewable energy by 2030 as its target. And then thirdly is as you mentioned, health sector. So as it has been said that in a family of four, one person is constantly ill. So government is also targeting to make the health sector more robust, as well as more accessible towards everyone, ma'am. And can you tell me the government's target for manufacturing sector? Yes, ma'am. Government through various targets like NIP, National Infrastructure Pipeline, is targeting for 111 lakh crore by 2025 to provide infrastructure support to various schemes. And secondly, ma'am, is PM Gati Shakti, which targets in collaborating various ministries and departments to streamline various processes to improve efficiency, as well as declining the logistics and providing more logistic supports to manufacturing sector, ma'am. Okay, so the main target of government is to increase the contribution of manufacturing sector is 16% to 25% by 2025. Right. Okay. 16 to 25%. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you, Sambhavam. Dinesh sir, any question for Sudhanshu? Okay. Akhilesh sir, any question? Sudhanshu sir, I have a question regarding that. We are celebrating today National Youth Day. How youth Hello. are an important factor in economy? Definitely, sir. India recently. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Yes, sir. So, as India in the recent years became one of the most populous country in the world, so our demographic dividend is increasing. Our demographic dividend has increased a lot, so we need to utilize it well. Otherwise, it will become demographic disaster in the coming years if we didn't train them, skill them, and reskill them or upskill them.
well. And sir, second is we need to also reduce our academia and industry gap, so that our youth, which currently, as per various reports, around 50% of the IITians are unemployable in the industries. So we need to utilize them well in our journey of becoming India $5 trillion economy. So I think it play a What very is, crucial role. what is Okay. demographic dividend according to you, Saswat? Sir, uh, demographic dividend is reducing the uh, reducing the uh, reducing the gap between working age population versus labor force participation rates, sir. What is dividend, by the way? Sir, dividend is you mm, the core thing, which is core thing to move towards dividend is, sir, utilizing our demography uh, to the uh, employing sector, sir, towards something Saswat, employability. leave. If you don't know, Saswat, no need to say, beat around Sorry. the bush. Right. Right. So dividend is purely commercial term, Right. right? That the shareholders get, na? Right. So leave. But demographic dividend is the benefit that you get because of our youth population Right. in terms of employability, working hands, workforce population, right now. So those benefits are demographic dividend. Got it? So how do you get that? Once you train, you skill your youth. If you do not skill, do not train them, they will become demographic disaster. What does that mean? They the youths will not be able to participate in the economy meaningfully. That is why we coin the term demographic disaster. Got it? Right. So the benefits we get because of the youth population is demographic dividend, basically. Right. Okay. Thank you, sir. Ashirvad, sir, any question for Sudhanshu? Yes, please, sir. Thank you. Sudhanshu, can you tell me about the India known as a valuation based? I'm audible to you? Yes, sir, you are. Yeah, thank you. India known as value based or valuation based economy. On the other hand, China known as manufacturing based economy. Difference between the valuation based or manufacturing based. Can you explain it? Sir, actually, I know the manufacturing based economy, but I'm not sure about value based economy. Like share market, I simply my comments. Share market based. Okay, sir. So dividend based. Right, sir. So if I can guess, sir, India as being a value based economy, where share market is not considered as the real terms of growth in the economy, as it is sometimes it is considered as a bubble. Like if somebody is investing a lot of somebody is investing a lot of somebody is investing on lot of somebody investing lot of on a particular share, its value increases various folds, which is not in the real term, but it is in the form of shares, or it is in form of values. But as it is not backed by real values or real money, so it collapses sometimes, sir. And China is backed by manufacturing base, so sir, it is more export oriented, as well as its manufacturing capacity is more, sir. Okay, tell me one more thing. We discussed about the 5 trillion economy. So what the right now size of Indian economy right now in the real terms and as well as nominal terms? Sir, in nominal terms, it is a $3.9 trillion economy as by 2024, sir, currently, which makes India is fifth largest economy in the world. And sir, what about real terms? Sir, in real time, I'm not aware, sir. Sorry. One more thing. We discussed about the earlier the human capital. We need a human capital or skillful labor for to reach goal the target of 5 trillion economy. So what the basic features of human capital? What the factors against human capital?
Sir, as per me, sir, the main factor is the main thing will be, sir, first will be health, second will be education, and third will be income, sir, by the human capital. So for that, sir, as I mentioned, we need to focus more on our healthcare, because in a family of four, one person is constantly ill, so that is not good for our economy. Second is, sir, education. We need to educate our masses well, sir, so that it can reduce our academia versus industry gap by reskill upskill, sir. And third will be, sir, providing a sustainable income to our masses, so that it remains motivated and consistent in the economy, sir. Okay, that's from my side. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Oh, thank you, Ashwath sir. I think, Sonia ma'am, there's a question for you. Sir, Yes, please. sir. I think 1 minute, Vatsal. I have a question to Sudhanshu. Am I audible? Yes, sir. in the Yes, sir. Yes. Ashirwad sir, just for a query, can you please tell what is value-based economy to the aspirant? Yes, sir. Please. Valuation, not value based, it's valuation based. Like जैसे earlier आपने हमारे student sorry सुधांशु ने एक बात कही यहाँ पर कि बबल है, but Indian economy known as valuation based economy. Like we have 5 trillion economy, no doubt, but इंडिया में जो लास्ट 10 ईयर में हुआ है वो वैल्यूएशन बेस्ड हुआ है. हमारे यहाँ स्टार्टअप बन रहे हैं, वैल्यूएशन बेस्ड बन रहे हैं. सो इंडियन इकोनॉमी बेसिकली ग्रोथ नहीं कर रही है, केवल वैल्यूएशन दिख रहा है इकोनॉमी के अंदर. हम चीजें केवल कंपनीज का साइज बढ़ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर वैल्यू. तो हम रियल टर्म्स में नहीं बढ़ रहे, बट चाइना मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ा रहा है. चाइना में लास्ट 10 ईयर का सेंसेक्स -1% है, हमारा लास्ट 10 ईयर का सेंसेक्स 100 मोर देन 300% है. तो ये अंदर है वैल्यूएशन बेस्ड इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी है ग्रोथ करी है वैल्यूएशन बेस्ड. इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है बेसिकली लोअर क्लास और अपर क्लास में. जो इन्वेस्ट कर रहा है शेयर मार्केट में वो और ऊपर जा रहा है, बट जो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है वो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास नीचे. तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ रहा है सोसाइटी में ड्यू टू दिस वैल्यूएशन बेस्ड इकोनॉमी. आई होप सो गेट इट सर. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Sudhanshu? Yes, sir. Vatsal, just a minute. So, Vatsal, can you please tell us what are the current barriers that needs to be addressed while improving the India's competitiveness in the manufacturing sector vis-a-vis China? the Definitely, question sir. is for Okay, sir. This question is for you, Sudhanshu. Please continue. Okay, sir. So, sir, as per recent peer review report of World Bank, India can improve its competitive index by improving on various fronts. One will be, sir, improving on its logistic costs, sir, which currently is 15% of GDP, which needs to be reduced to around 7 to 8% of its GDP, sir. And secondly, sir, ease on opening and closing of a business, sir. In India, ease of opening a business is a bit more, but closing of a voluntarily closing of a business is not that easy, sir. So many companies are afraid of it, sir. And thirdly, sir, our capital accounts convertibility is very skewed, as suggested by BRD report, sir. And fourthly, sir, as we are also earlier we don't used to have, sir, one indirect tax, which currently we have, sir, through GST, sir. And sir, we also have one of the most corporate tax. Earlier we used to have, sir, which we have reduced in recent years, sir, which has created a conducive business environment. I believe, sir, these are a few of the steps we can learn. Is there anything to do in the skill sector also? Definitely, sir. There needs to be more programs like PM internship schemes, which recently has been created, sir. And there needs to be more collaboration between industry and academia,
so that through college itself, students are more oriented towards uh, uh, towards experiencing sector rather than having a theoretical knowledge, sir. But don't you think these things in terms of skills are only on the paper, but when we come on the ground, there's a huge divide. What you are saying and what we are doing. Right, sir. It has been seen, sir, but these things have not been proven, sir. So there is still uh, needs to be a better indexes, I suppose, sir. I believe, sir. Okay, thanks, Sudhanshu. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Okay, Can we move forward to Rahul Ade? And I would like to invite Asirvad sir. Asirvad sir, please ask question to Rahul. Hello, Rahul. Rahul, English or Hindi? English, sir. Okay. Rahul, tell me about something. Inclusive development or inclusive growth in terms of India's 5 trillion dream. Sir, with respect to inclusive growth and inclusive development. Sir, first of all, the inclusive development refers to overall development of strata of society in terms of the basic necessities such as health, education, and standard of living, so that it could conclusively gives an age to India, as the India is having 25% 5 to 29 years of the young population, which can drive economy of the country in a well manner if they be if they will given the more inclusive development. And with respect to inclusive growth, it is a fair chance of having the opportunities for all the sections of society, as well as everyone will contribute in the growth of the country, so that the wholesome nature of the economy will be developed in all aspects of the criteria for sector, such as the health, such as the infrastructure, manufacturing sector, services sector, and the renewable energy sector, which is now we are focusing on. So I believe that these are the sectors which are focused on the inclusive growth. And these sectors, if we achieve a target of having the potential of that sector, we eventually get the inclusive growth as our highest point. So these are the things, sir. Okay. One more thing, Rahul. Please set the priority that those steps मुझे लेने चाहिए for 5 trillion dream. Steps priority क्या होगी? इस priority मुझे set कीजिए कि हमें किस पे पहले focus और किस पे बाद में focus करना हो. Okay. So the priority for 5 trillion economy to be achieved is first is job creation. The employability is very high, but the problem is unemployment rate is 9%, which is staggeringly high. That needs to be prioritized first. The second is the declining manufacturing sector. This should be focused on, because in the growth, the real growth of the country requires the manufacturing sector to be boosted up. As we have already discussed about 80%, 18% contribution, that needs to be more emphasized. The third is this increase in the overall health and education related infrastructure, so that we can give a quality education and skill development. As we know that around 51% of the graduate students are being skillable with respect to employment, but there are certain population which are not able to be they are not having the skill. So that's why they needs to be focused on, and we can use the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, as well as the Pradhan Mantri's internship program, which can ultimately leads to the this skill development. Also, sir, we can take the private players contribution in it. For example, CSR, as the Tata Consultancy Services Go IT, they are providing the free skill trainings to the IT graduates, sir. So these priorities, I think, should be focused on. Now, last one for me on my side. Yes, sir. Nirmala Sitharaman ji recently said we need an invisible hand for making a 5 trillion economy. What is that mean of invisible hand in economy? What does that particular mean? Invisible hand in economy. Can you explain it? Sir, I'm not aware about that statement. I have to check it, sir. Okay, please. Thank I will you. explain it later. Yes. Okay, thank you, sir. Ashirvad sir, question for Sonia ma'am, please. Yes,
सोनिया Sonia मैम। ma'am. जी। Okay. In the Hindi or English? Sir, English. Okay. Sonia, please tell me about the first of all, basic factual question. What the right now sector-wise criteria in Indian economy, especially in GDP, sector-wise, primary, secondary, and tertiary. Then let's next question. So Factual information. GDP contribution sector-wise, right now, as far as I remember, is for service sector, it is the largest, 55% around. Then is the industrial sector, secondary sector, which is around 29 to 30%. And the remaining part is the agriculture sector, which is around 17 to 18% fluctuates. Yes, sir. Okay. But recently, we just day before yesterday, government announced advanced estimate of economic GDP for 2025. We saw changes. एग्रीकल्चर सेक्टर ने काफी अच्छा ग्रोथ किया है, बट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर डिप हो रहे हैं लास्ट 1 ईयर में. एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऊपर जा रहा है, हमारा 4% ग्रोथ कर रहा है. तो व्हाट आर द रीजन, क्या लगते हैं आपको इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के नीचे जाने के? सिंपली. So for decline in the industrial and the service sector, which I can recount what happened in the last 1 year, is the first reason is the withdrawal of foreign investments from India and redirecting them towards America, where there are increased interest rates and more AI-driven sectors are getting more investments there. Second reason which I can recount right now is the less skills development, wherein the new opportunities are not being created, new startups are not being created in India due to lack of skills in our youth, since most of our labor is semi-skilled and unskilled labor. So right now I can recount this, but for increased in agriculture, I can recount it's mainly monsoon. We had a good monsoon last year, which helped, and even government efforts when it comes to Fasal Bima Yojana or subsidies in fertilizers, especially, which helped agriculture sector to boost. Okay, Manish sir, your input in this, like if you want to ask some question. Yes. Sunyam, tell me, if you are the chief economic advisor of the Prime Minister, what actionable suggestions you would like to give to the Honorable Prime Minister to implement and achieve the $5 trillion economy starting from today? So, most of the research in economy is already done. I cannot recount at the time the exceptional advice, but the major advices is first is the what I think the foremost priority should be the infrastructure development, whether digital or hardware infrastructure, hard infrastructure, because this infrastructure will lead to opening of the new investments. Second, I can think of is the tax rebates, which government can give to the industrial sectors, because a high taxation as compared to advanced economies or more investment based economies, Indian taxes are high on the corporates, which leads to more flying of money outside rather than being reinvested within the nation itself. Third is the skill development, human capital development. Yes, sir, these would be the main factors. Okay, so 3 steps you would like to suggest. 3 steps, sir. Yes, 3 suggestions from your side to achieve the $5 trillion economy. Sir, again, based on how production happens, it is the major factors of production. So we should focus on our labor. Since knowledge economy is the more or the new sunrise sector, so knowledge economy skills, reskilling, upskilling is required. Whether through industrial collaboration, through internships, which in the last budget was announced that government will be focusing. How is MSME performing right now in India? Sorry, sir, I do not have the exact data regarding this. Okay.
Okay, fair enough. Thank you. Okay. Sparsh ma'am, any question for Sonia ma'am? Um, okay. So I wanted to ask this, Sonia ji, ki are we growing enough? Since we all know for achieving this 5 trillion economy goal, we have to have a certain growth rate. So are we doing enough on that front? This is one question. Another is uh, we were just discussing that with we do need a decent enough demand generation, consumption. So what do you think that we need to do to increase that consumption? Because it's seen that it's being a concern for a while. So what do you suggest for that to try to increase the consumption? And one thing is the GDP growth rate. Oh, I'm sorry, ma'am. Yeah, there were couldn't two recall the questions first part. about the growth rate, GDP growth rate, and the other one was to increase the consumption patterns, to increase the demand. What should we do? The first question was regarding the GDP. I'm sorry, exactly, I don't remember like what it was concerned about. GDP in what sense? The Consumption. growth rate, the current growth estimates, are we should be Yeah, concerned about them? yes, ma'am. What should we do Yeah. on that area? Right now, ma'am, we are not growing at the percentages we desire to or we need to, because as per various scholars, we have to grow at double digits, 9 to 10%. And unfortunately, we are not. Last year, we saw a growth rate of 7% and even higher. But in my point of view, that was base effect largely because COVID era there was less investments and due to base effect that was larger than 7%. However, this current rates of 6.4 or 6.5% are declining, so that is a major concern. Second part is regarding uh, consumption pattern. So, how do we increase it? And even I have my own perspective here that whether we need to focus on consumption because GDP is driven by consumption, investment, and even export import. In my opinion, we should focus on export import more rather than consumption because export import we are lagging behind, we are in negative terms, so we should build our own competitiveness. So rather than a consumption driven economy, we should even focus on export driven economy. uh, uh, and since exports are fluctuating every year, definitely we cannot ignore consumption also. So consumption may government has done several steps like giving increasing the money supply through whether it is distributing the cash among women or giving scholarships, etc. However, I have a apprehension about this because when you increase money supply, you indirectly increase inflation, and when we increase inflation, it reduces our export competitiveness, and thus even it reduces our money value also and increase our import cost. So, in my opinion, rather than focusing on, we should focus on consumption, but higher focus should be on export-led economy. One question from this response only. How I mean, a few minutes back you were talking about taxation, right? Yes, ma'am. So how do you look at the current direct tax versus indirect tax base or the revenue proportions uh, in this, in achieving this goal? Because this is a big chunk of revenues for us, right? So how do Yes. you look at this? Ma'am, as far as I recall, currently the direct and indirect taxations are at par with each other, means they're almost equal. Moreover, direct taxation is more as compared to indirect tax. Definitely, indirect tax must be lesser because it is regressive in nature. It directly impacts the poor strata, and direct taxation must be more. But when we need to think of more investments, we have to somewhere reduce or give rebates. So there we can have a more condition wise.
tax concessions rather than giving a complete blanket taxation relief. We should have condition wise. That condition is you have to invest this money rather than distributing or the dividends among the shareholders. It should be reinvested within the economy. So there I feel it can be condition based tax rebates. Okay. Thank you. अभी मैं एक मेरा प्रश्न था सोनिया जी से। अभी आपने एक सजेशन दिया था कि हम कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह कुछ कम करें ताकि हमारा रीइन्वेस्टमेंट हो इसमें और हमारी इकोनॉमी बढ़े, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हमको कुछ बेनिफिट मिले। फिर पिछले वर्षों में हमने कॉर्पोरेट टैक्स काफ़ी घटाया, Yes. ठीक है ना? घटाया, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको नहीं मिला हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपलिफ्ट करने में। जो पैसा घटाया गया उससे उस पैसे का रीइन्वेस्टमेंट हमारे ख्याल में इसमें नहीं हुआ, बल्कि वो बस वो लास्ट टू गवर्नमेंट था, वो जो लास्ट टू गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम था, उसका कोई हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, इन्वेस्टमेंट के रूप में हमारे सामने नहीं आया वो। तो क्या ये सजेशन आपने जो दिया, ऐसा कोई ऐसा बेनिफिट आप देख रही हैं कि सजेशन अगर इसको कॉर्पोरेट को टैक्सेस कम कर देंगे तो इसका हमारा कोई लाभ मिलेगा इसमें, इस पैटर्न पे? और अगर ये नहीं काम करता है तो फिर दूसरा इसका क्या है, अल्टरनेटिव क्या है? So definitely we have not seen increased investments. Rather, more investments are being done by multi-billionaires outside India rather than being in India. So one thing I would like to suggest here is the condition-based investment tax rebates. That condition should be there. Like in defense sector, we also, when we make international deals, we say you have to invest this money, part of this money within India. So one thing we can do that. And second thing I would like here is to give tax rebates if they are investing in social corporate social responsibility. We can increase that part, that this tax rebate you are getting, whether if you are completely following the social responsibility towards the society. Third thing is increasing that chunk to public private partnerships, that tax rebates will be there, that if you invest this in public private sector or the projects there. Because when I see a higher taxation, so government is obliged somewhere due to political reasons to redistribute that money among the people. And even the socialist sector of economy, we have seen that there is huge corruption. So rather than getting that money to government and wasting them through corruption, so we can have condition based taxation. And moreover, what we need to do is to smoothen our investment process. We do not have land leasing agreement, we do not have skilled labor, we do not have ease of doing business. So on that part we have to do, because lots of people invested during the era of post 2004. Lots of investment came, we saw lots of huge percentages of GDP growth. However, that did not convert into real terms. The main reason was the lack of land reforms, tax reforms, and labor reforms, etc. So rather than just focusing on money, we have to focus on other factors of production also. अभी हमारा एक चल रहा है कि हम लोग ये स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, बहुत ज़्यादा इसको फोकस कर रही है, लेकिन जिस जिस तरह से इसका प्रयास किया गया उस तरह से उसका आउटकम नहीं आ रहा है। ये जो हमें ये आपने सजेशन दिया हमको कि अगर हम लोग इसको कंडीशनल रिबेट दें उद्योगों को, सोशल रिफॉर्म पे अपना सोशल उसमें अपना उसको इन्वेस्टमेंट करें, तो अगर ये हम लोग अपना स्किल डेवलपमेंट का काम जो है वो खुद करने के बजाय इनको टैक्स में जो रिबेट दे रहे हैं, उस फंड से इसको कवर करके उसको कंपल्सरी कर दें, इसमें कितना आपने इतने परसेंटेज को आप इतने परसेंट ऑफ द लेबर को आप अपना इसमें स्किलफुल करिए और उसको अपने यहाँ री-एम्प्लॉय करिए। तो इस टाइप से मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको उनके ही उद्योग के लिए और अच्छे स्किलफुल और बेटर स्किल Yes, से भरे हुए लोग मुझसे मिल सकते हैं। आपकी क्या yes. राय है इसमें? Indeed, sir, because right now private sector knows what kind of skills they want. Yeah. We have somewhere lag in our education system, where our education system or our curriculum is not updated as per the requirements. So private sector knows what kind of skills they want. If they open that skilling sector, or if we give them public partnership, public private partnership in the skilling sector,
they can grow the knowledge economy, in my opinion. Directing our labor, we produce lots of engineers, but they do not have knowledge in machine learning or AI. But as per their requirement, Infosys hires lots of people. They have to change their skills so that they can do by even industrial and academia collaborations also. Like your tax debates are there when you invest certain chunk of your money in the academia sector, where rather than just creating patents, you even translate them into real products. थैंक यू। Thank you. इसमें एक प्रश्न मेरा खाली और था एक हल्का सा ले लेंगे कि अभी जो हमारा एआई का वो बढ़ रहा है और उसके बेस पे हमारा जो जो मशीनीकरण हमारा बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पर है इसमें और बढ़ती जा रही है। इसकी संभावना बहुत ही कम है कि इसमें कम होने जा रहा है। इसको कैसे हम लोग अगर अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे बढ़ती गई और हम मशीनों पर इतना ज़्यादा बेस करते गए, या ये हमारा इसमें एक अलग थ्रेट के रूप में आ गई है एम्प्लॉयमेंट के सामने, तो इसके लिए क्या सजेशंस क्या आपके हैं? इसको हम लोग क्या करें? इसको कैसे इस चैलेंज को कैसे हम फेस कर सकते हैं? How can this challenge? So, in my opinion, technology changes in every era, and right now, what we are facing is the faster pace of changes in technology. So, it is always a vary when new changes comes. Our society varies. For example, when textile looms came, power looms came, the handloom sector varied. But it is not the employment opportunities which are decreasing. Rather, we have to shift the skill sector or the skills from the individuals from previous technological era to new technological era. So we have to skill them, reskill them, and even upskill them time to time according to the technological changes. Okay, thank you. Thank you, Sai. So I would like to highlight one point here also, that we somehow limit our education up to college level graduation or post graduation, and somewhere we forget that learning is a lifelong process and which has to be done continuously. Okay, thank you, ma'am. So moving to the next round, we have some other participants also. Ujjwal, can you please put some light on the issue regarding $5 trillion economy? Ujjwal, am I audible? Ujjwal, am I audible? I think he's not getting your voice. We can go move forward to next participant. Okay, Sejal Arya, are you here? She's also not here. Okay. चलिए नेक्स्ट राउंड हम लोग करते हैं कि मंजेश इज हियर। Yes, sir. हेलो सर। जी मंजेश, ये बताओ कि मंजेश, हाँ, चलिए हम पूछ लेते हैं एक बार। मंजेश, आप ये बताइए कि अभी हमारे यहाँ जो स्थिति है वो ये है कि एक बड़ा हिस्सा हमारे देश का वो 5 किलो अनाज में के भरोसे रह रहा है। 80 करोड़ के आसपास लोग रह रहे हैं। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात चल रही है उसमें हम लोग क्या वास्तव में कुछ सही जा रहे हैं हम लोग कि इस 5 किलो अनाज पे 80 करोड़ जनसंख्या हमारी जो निर्भर है, इसके बाद भी हम अगर ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगले 2 साल में कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, तो क्या संभावना है इसकी? संभव है? जी सर, एक ये तो समस्या है कि अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं, फिर भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की जरूरत पड़ रही है, तो कहीं न कहीं ये धरातल के स्तर पे एक चुनौती है। तो इसके लिए सर एमएसएमई और स्किल डेवलपमेंट, वोकल फॉर लोकल, इस तरह की जो स्कीमें चलाई जा रही है, इसको और प्रमोट करना चाहिए। और सॉरी सर, और स्टार्टअप इंडिया में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अप टू 25 लाख लोन भी दिया जा रहा है स्टार्टअप के लिए, और इसी तरह से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। तो
स्किल डेवलपमेंट, पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू हर एक जगह पे सेंटर बनाकर वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जैसे होटल मैनेजमेंट, सिलाई सेंटर, इस तरह के प्रोग्राम के थ्रू। तो सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन इसको इसको और थोड़ा संवेदनशीलता से देखने की जरूरत है कि लोगों को गरीबी से किस तरह से बाहर निकाला जाए और महंगाई को भी नियंत्रित, जैसे इंडिया का 5 इकोनॉमी तो बढ़ रहा है, बट महंगाई भी उसी के साथ साथ उसी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसे भी बैलेंस करने की जरूरत है। किसी का प्रश्न है इसमें? और सर मेरा एक और ये डाउट था कि अगर हम इकोनॉमी ठीक है, रिपोर्ट कहता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बट ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो डॉलर की मुद्रा में इंडियन रुपी डाउन हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसको भी किस तरह से गवर्नमेंट बैलेंस करे, इस हमको समझाएं सर। सो मेनी चैलेंजेस, लेकिन सर ये सब पे लड़ाई की लड़ी जाएगी। अभी अब नेक्स्ट राउंड हमारा चलेगा। अभी और कोई है पार्टिसिपेंट्स में जिनको? जी सर, आई थिंक गौरव वांट टू से समथिंग। गौरव, गौरव आप हैं यहाँ पे? यस सर, नमस्ते सर। जी प्लीज। गौरव जिनसे अपना प्रश्न करिए आप। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। सर मैं कैन यू प्लीज मीन्स रिपीट द क्वेश्चन? आशीर्वाद सर, तो आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी? सर इंग्लिश सर। ओके, सो हाउ डॉलर इकोनॉमी शुड बी अचीव बाय की सेक्टर्स जो हमारे हैं। देर आर सम सेक्टर ना, प्राइमरी सेकेंडरी, और इन सब से इनका क्या रोल यस हो सर, सकता है? यस सर। For sir, in the economy of the India, in the of our country, the contribution of services sector is more than as compared to other two sectors like agriculture and manufacturing sector. So the role of I think the government should means increase the means funding through Skill India mission, as well as through means industry and as an industry and academia tie-up. Means every year this each number of government should target that this number of students from each college or university should be given skills, and these are the responsibility of the according to the CSR funding or CSR initiative of each company, which is 2% of their profit. So there should be this step for boosting the services sector, and we have to and also the services sector is helpful to decrease the unemployment rate, because most of the people are employable in services sector, and TCS, Infosys, they employ in mass. And second, sir, in manufacturing sector, I think the initiative of the government, which is the PLI incentive scheme, public link incentive schemes, government is focusing to make textile parks, and also in steel sector. So the means government is inviting investment and through the incentives. So this is the one of the best step the government has taken. And in agriculture sector, sir, means our agriculture sector is mostly dependent on various factors like the in monsoons or in the supply of inputs to the farmers like seeds, fertilizers, and other irrigation facilities. So in agriculture sector, government has introduced is giving subsidy for fertilizers, as well as helping the through PM Kisan Yojana by giving the means by building confidence in the agriculture through by giving the if there is any loss, then government the kisan is compensated through this scheme.
and we have to, sir, we have to increase the pace of this production of agriculture through by linking the farmer through food production industry, sir. Means if there is an supply or there is a production of wheat, then we have to make the food production in simultaneously in that area, so that the consumption of that particular agriculture product will be used in food production industry, and it will generate more income through exports and other markets. So these are my points, sir. Thank you. Hmm. Saima ma'am, any question for No, Gaurav? just a minute. What is PLI scheme, dear? Sir, PLI scheme stands for Public Link Intensive Incentive Scheme, sir. In this scheme, sir, Yes. yes, Hello. Go, please read. Please read. That's why I pointed you out. That is not public link scheme. This is production link incentive scheme, sorry. which is given on incremental sales of the goods manufactured in India. Not for all goods. There are certain classes of goods, and industry identified for that. So read in detail about it. They may ask you, right? Yes, sir. Sorry, And sir. Sorry, one sir. more question. No, it's okay. No, sorry. Okay. One more question. So someone previous to you was telling that if double-digit growth rate is there in the economy, then we are going to achieve the $5 trillion economy. So Yes, sir. are you sure? Is it the only rate of growth which is going to determine the achievement of the target, or there is something else also? If that, then what is that else? Sir, I support your statement. That means, according to the question, that the double-digit growth is yeah, important for achieving the 5 trillion economy. But some other points are also essential. Like, sir, we have to decrease the inequality rate, as because No, most leave. of No, no, our no, 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 no. So let me ask you directly: is there anything to do with the exchange rate of currency and the achievement of $5 trillion economy? Any link with that? Yes, sir. Yes, sir. Currency, sir. Our exchange rate is now means 85 near to 85 rupiah per dollar. So if our currency will become strong, then most of the, sir, investors, they have their confidence that they will put their money, and our foreign currency reserve, sir, also will get most more valuable, and we can get more FDI and FPI, and it will boost our economies. So this is for all the aspirants who are there today. So there are the two factors, not just the growth, but the exchange rate also. And but exchange rate is not related the way you are saying, right? Yes, sir. If the remember, this is the nominal figure, right? The 5 trillion is not the real GDP. It is the Yes, sir. nominal one. So it depends on the exchange rate. Even if the rate of gets 25%, 30%, but the rupee weakens further, then it will delay the achievement of the $5 trillion economy. Got it? Yes, sir. So that way it is So, linked. Anyway, good. okay, Good. sir. I will read. Others may please ask. Okay, Saima ma'am, any question for Gaurav? Ma'am, please unmute. Gaurav, I have Yes, one ma'am. question. It is said that no country can grow enough if half of its population is held back. So, what the government is doing for reversing the declining female workforce of India? Mention some government schemes. Yes, ma'am. Madam, first scheme is the creation of self-help group, madam. Self-help group is created in the mainly it is created in urban and rural level, but the main focus is on rural level, madam. Because they the due to the self-help scheme group help group,
they are given loans in very less interest rate, madam. I am giving the example of Odisha, in which government has given them loans in 0% rate, and they are means investing, in they are means involved in handicrafts and poultry farming, and these are through this they are means exporting their means supplying their products in food products also. They are supplying their products to urban areas, so their economic independence has increased. And second, madam, for female workforce upliftment, government has taken measures like they means like in the education sector, like madam, in the uh, like in the female workforce, for protection of the female workforce, government has made laws so that their means to decrease their exploitation in the workforce. And the second, madam, Manrega scheme is also a very good scheme for female workforce. Like they are given opportunities, and madam, through this, their economic independence has increased, madam. This, thank you, madam. Good. And other than Okay. this, can you mention some energy efficiency measures which government has taken, like GST and insolvency and bankruptcy code? Okay. Oh no, sorry, madam, I have no idea. I will read. Okay, fine. Okay. अभी हमारे Done. मतलब अपने मनीष जाखड़ को कहीं जाना है, तो मैं चाह रहा था कि एक राउंड उनका वही हम उनका फीडबैक उनका ले लेते हैं, उनका पर्सनल, उसके बाद वो चले जाएंगे, फिर हम लोग बाकी अपना कंटिन्यू करेंगे। मनीष जाखड़, प्लीज गिव योर फीडबैक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। क्या सजेशंस होंगे उनके लिए, जा सकते हैं आप, प्लीज। Yes, one by one, can I see the candidates switching on their video so that I could recognize? Please keep them on the screen. Huh. Sonia ji, Shashwat. So starting with Sonia, I mean, fantastic. I mean, lots of praise for her. She had good knowledge, and she has read about also in depth of the topic. Lucid, right? Understand well. Sudhanshu also, very fine. He was also very apt in explaining the things. But the other participants, especially Manjesh and Rahul, need to read more, right? Get some knowledge of the topic, and remember, what you speak, words matter. Carefully speak, carefully think. Take some time. If I ask you some question, take a minute, 30 seconds, think what you are going to speak. And systematically, it should not come कि एग्रीकल्चर भी कर लेते हैं, इंडस्ट्री भी कर लेते हैं, नो। एक फ्लो में होना चाहिए आंसर, राइट? हाउ ब्यूरोक्रेसी वर्क्स, हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। आई मीन somebody puts you a draft कि हमको मान लीजिए $5 trillion इकोनॉमी करना है, आप ऑफिसर हैं, तो यू राइट इन द फाइल नोटिंग, yes, we can do it by doing so and so. You systematically write 1, 2, 3, 4, 5, 6 para, right? Actionable points. So when you speak, you are going to be future bureaucrats. So it should reflect in your answer that you are speaking systematically. You are arranging your thoughts. It should not come randomly, कुछ भी बोल रहे हैं, right? So that's all. I mean, overall good. Keep reading, keep updated, and government schemes are important in UPSC, right? Especially while you are answering these kind of questions now, how can we achieve what the government is doing? So in all those things, your government schemes will come at handy. Thank you. Thank you, Manish sir. Thank you so much. Now Thank please आप इसको कंटिन्यू करें, वात्सल्य जी। Okay, so Ashirvad sir, I think Shashwat was left that time. Any question for Shashwat, please? Shashwat. Okay. Shashwat, can you tell me about the first of all, that one is मैं थोड़ा सा बड़ा कैनवास पे लूंगा। डेवलप इंडिया बाय 2047, not just 5 trillion, डेवलप इंडिया इन अमृतकाल। सो फर्स्ट थॉट, व्हाट अबाउट, क्या हो सकता है या नहीं? Audible? Yes, sir. Yes, sir.
Sir, good afternoon. Sir, India has set itself a target of becoming a developed country by 2047. Here, the word development means increasing India's per capita income as per World Bank more than $5,000 per person. $5,000. Okay. Yes, I think sir. somewhere $13,000 per capita. Whatever. Please go ahead. Okay, sir. So in line of that, India is pursuing some policy changes related to it. For example, it is based on if young democracy, as India, in case of India, 65% population is under 35 years of age. So we are focusing upon skilling this young, vibrant, democratic, vibrant young youth so as to increase their robust demand. In regarding to that, we are also taking some structural changes in the economy, for example, by bringing one nation, one tax in the form of GST, and some structural changes in the form of bringing insolvency and bankruptcy courts for ease of doing business. Apart from that, sir, we are also have carried on we are also creating robust infrastructures to meet the demands of future Indian economy. Moreover to that, we have also incorporated technology in the form of digital public infrastructure. As we are we have we have ourselves set a role model in the form of UPI and this Jam Trinity and unified lending interface. Apart from that, we are also trying for some inclusive growth models where we are distributing our income to our vulnerable sections in the form of this Garib Kalyan Yojana, where all the weaker sections are also being taken care of. With this, if we are also focusing on sustainable energy by increasing affordability and accessibility and Okay. I got it, Shashwat. मैं आपको रोकूंगा एक जगह. yes, sir. You talked about the okay जो points का, that's fine for me. But difference between आपने जो कहा long short to mid term में ये step ठीक है. What about the long term plan after 25 years? जहाँ इंडिया के पास demographic dividend नहीं होगा. Southern state में already population कम होना start हो चुकी है. What about 25 years के बाद जहाँ पर हमारे पास more competitive countries होंगे, हमारी demography इतनी strong नहीं होगी, population 160 करोड़ के plus होगा. That time उसमें हम क्या प्लान कर रहे हैं? अभी जो प्लान है short to mid term, GST reform and all this insolvency reform, all this PDS system for short to mid term. What about the long term plan? What about after 25 years? That is Amrit Kal. वो अमृत काल का प्लान क्या है? ये सब प्लान शॉर्ट टू मिड टर्म बता रहे हैं मुझे. ये सब 5 ट्रिलियन के प्लान है. व्हाट अबाउट द 20 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन इकोनॉमिक प्लान? कोई अंतर कर सकते हैं क्या हम इसके अंदर? Yes, at that time, after 2047, when we will enter into Amrit Kal, we will have different challenges in the form of, as our young demography will not no more be young, but for as we have also north to south divide and east to west divide, so our northern population is already younger and it will even continue to be younger at that time also. But our southern states which have older population as compared to north, then we will in our northern states will fulfill the demand of requirement of southern states by migration and job employment. Apart from that, to cater the southern population also, we will have longevity dividend. So by skilling them as per with enhancing their skills and learning from their experience, we can also incorporate into our economy. Apart from that, sir, our challenges will be, as we have premature deindustrialization. So there is further our manufacturing growth has in last 10 years or something already stuck at 10%. So we still have a lot of to catch up
in this regard. For example, in case of textile and pharmaceuticals, India is already a pharmacy of the world, and other in production of engineering goods, there is still will be a lot India will it contribute to the world. These are some That's right. measures. Yes, sir. Fine for me. Thank you, Asim. Thank you, sir. Shashwat, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Shashwat, can you throw some light if India want to achieve this 5 trillion goal? Some of the modernization in the Indian legal system that you would suggest? Yes, sir. For Indian legal system is an important part of India's governance. As in criminal justice, legal it all includes policing, prosecution, role of court. To meet present day demands, where technology has infiltrated in all every aspects of our life, so we also need to improve our criminal legal system also. In this regard, we are using technology in the form of Supace portal, where Supreme Court is using AI to monitor the cases which are pending for a long time and how we can easily dispose of. Apart from that, with the e-court mechanism, we can track our cases, and the with new Bharati Nyaya Sanhita and Bharati Nyaya Suraksha Sanhita, we have given the equal mandate to all electronic evidences also. So in considering all these aspects, we are incorporating technology in all the every space for this, so that justice is delivered and it is seen as as a last in the form of last mile delivery. It is provided to individual at their doorsteps. Okay, so like while formulating the Constitution of India, we looked upon different constitutions of the world, right, Shashwat? So if we want to attract foreign investors in India, which country models would you like Indian government to see in terms of legal system reforms? Sir, Indian legal system is based on civil law system, where based on UK, as India has already got their legacy from them. So in India can learn from British model, where the same system is there. And Shashwat, I think I did not got my question. I told ki if we want to attract foreign investors in India, है ना? So yes, sir. which country would you suggest Indian government to look at their legal system reforms? Okay, sir. Thank you, sir. In India, Bar Council of India mandates whether any foreign firm can invest in legal infrastructure in India or not. So regarding that, we can learn from American legal system, where there is private multinational companies which are participating in private legal practices. However, with coming of foreign legal firms in India, the cost of getting legal justice may increase enormously, as we already have a high pendency of cases, and already the advocates charge a hefty amount of fees. So we need to take a cautious approach here, and the government needs to fulfill its mandate of providing free and equal legal justice to citizens under Article 39A. But don't you think Singapore has done far better vis-a-vis America in terms of attracting foreign investors? Yes, sir. Singapore has itself set a role model of arbitration center as a international trade disputes. So India recently, with the
Arbitration and Conciliation Amendment Act, India has also shown interest to provide India as a hub of arbitration, international arbitration. However, there are other linkages also, as there is a presumption of that there will not be any biases against the either parties, and the bringing their case to arbitration will not hamper their law and order in that country. For example, recently Vodafone case was brought in Arbitration Council of India. Okay, thank you, Shashwat. Thank you, sir. To Pankaj sir and Akhilesh sir, any question from your side, sir? Good afternoon, Shashwat. Yes, good afternoon, sir. Hope I am audible. Yes, sir. Shashwat, as we all know, you are going to appear for the interview. तो मुझे ये बताइए, सपोज यू आर सेलेक्टेड, फाइनली गॉट सेलेक्टेड, तो आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा एज अ क्वारिनरी सेक्टर? जैसे हम लोग जानते हैं कि क्वारिनरी सेक्टर में डिसीजन मेकिंग जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं हमारे हर मिनिस्ट्रीज में वो करते हैं, तो आपका क्या रोल होगा एज अ सिविल सर्वेंट डिसीजन मेकिंग, और उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे? इस पे आप थोड़ा सा अपना इंसाइट दीजिए। Thank you, sir. As a future bureaucrat, I think my I will have to take decisions, so I will ensure that I take the decisions promptly and timely manner, not sitting on files, and based on the facts and evidences, based on objectivity and following rule of law. Or I will ensure that everyone is heard before the decision is taken. So all these aspects I think I will take, so that there is no policy paralysis in my department or something. Thank you, sir. Pankaj ji, next question from you. Any question from Pankaj ji? So you are not audible. Not audible. हाँ, अभी मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. एफडीआई क्या है और एफडीआई का 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने में क्या रोल है, और अभी क्या कंडीशन है एफडीआई का हमारे कंट्री में? So FDI, its full form is foreign direct investment. So whenever a country invests less than 10% of their equity in India, it is considered under FDI investment. It comes through stock market, and presently India is a FDI destination, friendly destination. However, in recent years, especially in last year, there has been capital flight of FDI from India, as there are many reasons to, especially to USA, as more and more investment is being done on AI, and USA itself is showing promises on increasing AI research. And apart from that, sir, the global uncertainties in the form of Russia-Ukraine war and Israel-Palestine war has destabilized trade linkages. So the trade has restricted in itself. Because of that, more and more investment is being done on technology based industries. So in India, India is no more a very friendly destination for FDI, as the FDI is a volatile thing, so it is not certain for that whether it will continue for long or not. What measures should be taken to attract more FDI? Thank you, sir.
to attract more FDI in India, India needs to provide a conducive business environment in the form of, for example, with the schemes like PLI, where with the in especially in case of mobile manufacturing, India attracted a lot of FDI, and India itself became second largest manufacturer of mobiles in the world. In other sectors like pharmaceuticals, so with easy entry and easy exits and providing conducive environment, and apart from this, sir, providing capital current account convertibility, capital and current account convertibility, we can attract more and more FDI. Okay, thank you. Ashwat sir, any question from Sudhanshu? Shashwat? Done from my side, sir. Done from my side. Okay, Sudhanshu. Already done. सुधांशु से मेरा एक क्वेश्चन है। सुधांशु, क्या आप सुन रहे हैं? Yes sir, I'm audible. जो हमारा औद्योगिक विकास है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और साथ में जो पर्यावरण है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम मिल करके अपने जो टारगेट है उसको हम पूरा कर सकते हैं। और इसमें एक पहलू ये भी है कि जो हमारा मांसाहार उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो हमारे इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है या फिर वो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है? इसमें क्या आपका व्यू है? और जो भी चीज़ें इसको सही करने के लिए होती हैं उसको आप बताइए। Sir, the first is our climate action sector in focusing of our focus towards renewable sector to achieve $5 trillion economy in the near future. Sir, we are working towards it, and we are focusing more towards green energy, wind energy, as well as solar energy. For that, we have targeted around 450 gigawatt of renewable energy by 2030, and India has participated in India has became founder in various organizations like International Solar Alliance. It has started International Solar Alliance with France. And sir, secondly, you asked about the meat sector, whether it is contributing towards our goal or not. So, sir, I believe it is contributing towards, it is helping us in achieving, in reducing our hunger. However, it is often seen that it is increasing our greenhouse gases. Like when these animals are used for our consumption or for our hunger consumption, they releases various types of gases, and such industries are also are supporting towards leather industry, sir. So that is very polluting, that are very polluting industries, and that we should work towards making them sustainable, sir. And secondly, sir, as it is a climate thing, I believe that we need to focus more on women participation in such sectors, as it has been seen that by making by empowering more women in our economy, it has been seen during the COVID-19, those countries which were uh, which were uh, which were uh, which were handled by the women prime minister or presidents, they were in a better conditions, rather than those countries which were handled by the men leaders, by the male leaders. So I think as it has been also seen that if we improve the female labor force participation rate to at par with the male labor force participation rate, we will also improve our GDP by almost 18% as per Niti Aayog data. Okay, thank you, Sudhanshu जी. Now we are moving forward. कि अभी हम लोग जो हमारे ऑडियंस हैं उनको एक मौका दिया जाएगा कि वो लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो पार्टिसिपेंट से कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले हम एक लास्ट क्वेश्चन हम लेना चाहते हैं स्पर्श मैडम से, कि वो अपना क्वेश्चन अपना शाश्वत हैं, सुधांशु हैं या सोनिया जी हैं, इनसे क्वेश्चन लेना चाहें तो अपना ले सकते हैं।
और थोड़ा अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद जाएँगे भी ऑडियंस के बीच में। उसके लास्ट में हमारे आशीर्वाद सर जो हैं, इस पूरे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर अपना एक कंप्लीट इनसाइट देंगे। जो कुछ यहाँ से छूट गया है, प्रश्न में छूट गया, उत्तर में छूट गया, उस पर अपना देंगे। आपसे अपेक्षा करते हैं कि एक बार आप इसमें इनको लोगों को जो आंसर दे रहे थे 1 टू 1 अपना, उसमें कैसे अपना आपका फीडबैक भी देंगे और कुछ सजेशंस भी देंगे। पहले प्रश्न करना चाहे प्रश्न कर सकते हैं, उसके बाद फिर अपना फीडबैक और सजेशंस। ठीक, मैं सवाल कर लेती हूँ। मेरा ये सवाल सबसे है, जो जवाब देना चाहता है वो अपना हैंड रेस कर सकता है। कि जो हमारे छोटे उद्योग है, सूक्ष्म मध्यम और है ना लघु उद्योग जो है, एमएसएमई, इनको किस किस्म के सपोर्ट की बेहद अर्जेंट आवश्यकता है। द स्टेप्स वी नीड टू टेक अर्जेंटली, नॉट ओनली इन द शॉर्ट टर्म बट स्ट्रक्चरल लेवल पर भी। ये एक मेरा सवाल है। दूसरा सवाल है, जॉबलेस ग्रोथ शब्द मुझे लगता है हमने बहुत लंबे समय से सुना है। कोई भी एस्पिरेंट जो बहुत पहले तैयारी करता था वो भी ये सुनता था, और अभी भी हम बहुत इंटेंसिफाइड रूप से अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रक्चरली और पॉलिसी वाइज क्या क्या करना चाहिए? तो दो चीजें हैं, एमएसएमई सेक्टर और दूसरा जॉबलेसनेस का जो क्राइसिस है इसको लेकर। तो जो भी कहना चाहता है वो हैंड रेस करके बता सकता है। सुधांशु, आप बताना चाहेंगे? Yes, Yes, ma'am, ma'am. I can. बताइएगा। For MSME sector, I believe that the funding is one of the concern, and because they are often denied the loans from the local area banks. And secondly would be, ma'am, skilling and upskilling of the members, because as more than 85% of the SHGs, self-help groups, are regulated by women itself. So they are often seen that they are not skilled enough, and if they are skilled well enough, they can create a larger impact in the society. Third will be focusing more towards the health sector, as well as health sector of the MSME, because as I mentioned, ma'am, in a family of 4, generally it has been seen that one person is constantly ill, so it is not contributing to the society as well as to the economy. So we need to work upon that, ma'am. And fourthly will be, ma'am, reducing the gender gap disparity, which as per World Economic Forum is it has been mentioned that women earn less than. सुधांशु, मैं आपको यहाँ रोकूंगी बीच में। मेरे दो क्वेश्चंस थे और उनके दो अलग अलग जवाब होंगे। मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा मिक्स कर रहे हैं, तो आप दो अलग अलग सवालों के जवाब दे सकते हैं। Okay, so what I was mentioning that women are paid less than men. As per World Economic Forum, there has been 34% women are paid 34% less than men. And as per your second question, ma'am, you talked about jobless growth. Ma'am, as it has been mentioned this time in our economic survey also, we need to move towards economic, as earlier it was mentioned that we need to move towards production linked incentive schemes. So we need to move towards economic linked employment linked incentive schemes, ma'am. So that should be our concern, ma'am, as our demography is constantly increasing, ma'am. And as you mentioned that jobless growth has been a constant issue, ma'am. I believe that that may be because we are constantly becoming the populous country in the world, and we have reached that stage, ma'am. So I believe, ma'am, we need to focus more on employment linked incentive, so to make our population more employable to various industries as well as various sectors, ma'am. Okay, so what are those industries which you think are more employment intensive? What are those sectors? First will be, ma'am. Yes, ma'am. First will be, ma'am, agriculture, as it is currently also employing half of our population. And ma'am, second will be textile sector, because it is second most employable sector in India. So for that, various schemes have been launched, like PM Mitra scheme. Second is 5/5 policy, that is farm
to fabric to fashion, then fashion to foreign, ma'am. We need to skill some population in these sectors also. And ma'am, third will be, we need to cater our raw material sectors. Like we are exporting a lot of textile in our in raw materials. Like we are exporting a lot of cotton to the world, and we are importing a lot of finished goods in terms of fabric from the world, and we lack value addition part. So that is our concern. For that, I believe, ma'am, Made in India initiative is a good thing. Like which was deficient in Make in India initiative, which was only more of a assembling model. And from Made in India, we are working towards it, ma'am. And fourthly would be, ma'am, our policy of Jan Dhan Yojana. And with that, we incorporated a lot of our masses. We incorporated a lot of our masses to the financial sector, and we provided them with the due advantage of loans and debt facility, I believe. Okay, thank you, Siddharth. Thank you, ma'am. Ma'am, may I add few points here? Yeah, sure. Ma'am, one is a consistent export policy. Our government tends to block the exports abruptly. Like, for example, basmati rice or rice export. Abruptly, we put ban on this. Second is market research and awareness. Our export companies do not know, or if I have to open a business today, I do not know in Europe what is the demand, what kind of products are demanded, what are their measures, legal system. I do not know. So, second thing is market research, and third thing is lowering customs on importing raw material, which indirectly increases the product cost and reduces their competitiveness. And fourth thing is the smoothing of taxation, especially GST taxation. In oil case, here, for example, if I give sarson ka tel, government does not know whether it is a pharmaceutical process, edible, or whether it is a hair oil. So which type of GST has to be kept? Then is another example is popcorn, caramelized popcorn and the normal popcorn. So we have to smooth this process, because MSME is the one which is working in these lower strata, or the products which are massively consumed or consumption on the mass basis. So here we have to work a lot. Thank you. Very nice, very nice. शाश्वत Okay. शाश्वत से पूछें, शाश्वत इस पे आपका क्या इनपुट है? Yes, sir. Regarding jobless growth, I want to add sectors like we are already our construction sector. We are employing around 10 to 12% of population, and our focus is on infrastructure. So, we with more investment in infrastructure, we can already employ more and more construction workers. And apart from that, other sectors like leather industries, it is also a labor intensive sector. From toy making industries and automation, these are another sectors which I think can be added. And the question regarding to MSME, ma'am, sometimes there is marketability problem. For example, MSME, they cannot compete with the other private players of the in the market. So we need to technologically empower them and make them and make the market accessible to them. Apart from that, another issue is timely payment. Most of them, they supply goods to government departments, and the payments are paid 6 months later, and they already have very little working capital. So they cannot procure further raw material to produce more goods. So there is need of timely payments, and more and more access to funds from the banks. These suggestion I think I can be added. Thank you. Okay. Now we call to Ashirvad sir to put some light on the entire concept. Before Ashirvad sir, that, please take it. before that, I want to ask any audience
ओके हमारे जो बच्चे और लोग हैं यहाँ पर, कोई प्रश्न करना चाहते हैं? क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस? ओके, नाउ सर प्लीज इनवाइट अस सर, आशीर्वाद सर। सर मैं थोड़ा सा मूव करूंगा एकेडमिक चीज़ों पे लेकर, बीइंग अ टीचर, क्योंकि मेरा काम है ये। मैं एज एक्सपर्ट की तरह बात नहीं, एज एकेडमी की तरह बात में करूँ उस पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये $5 ट्रिलियन जो हमारा ड्रीम है, ये एनी हाउ अचीव हो जाएगा। नाउ वी हैव ऑलरेडी $4 ट्रिलियन ऑलरेडी अचीव हो चुका है। इस बार भी हमारा नॉमिनल जीडीपी 10% बढ़ रहा है। दैट मीन्स 4.4 ट्रिलियन होगा नेक्स्ट ईयर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 4.8 होगा, और एनी हाउ 2027-28 तक विदाउट एक्स्ट्रा एनी एफर्ट हम 5 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। तो इसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट बताना ही नहीं है कि हम अचीव कैसे करेंगे। इसलिए अब किसी स्टूडेंट ने कहा कि ऑलरेडी नॉमिनल है ये, नॉमिनल जीडीपी एनी हाउ 5 ट्रिलियन पहुंच ही जाएगी, कोई कुछ नहीं करेगा तब भी पहुंच जाएगी। लेकिन मेरा जो बड़ा गोल है यहाँ पर, बड़ा कैनवास होगा अपना, कि कैसे हम लोग इसको मोर इंक्लूसिव बना पाए। तो वो जो बातें हैं ये सारी मुझे लगता है इंक्लूसिवनेस के लेकर होनी चाहिए। एनी हाउ 3 to 4 हुए, 4 to 5 तो हम हो ही जाएंगे। इसमें अभी अभी इवन इस ईयर भी अपना जो डेटा डे फॉर यस्टरडे मेरे पास आया, 6.4% रियल जीडीपी ग्रोथ एंड नॉमिनल जीडी 9.9%, नियरली 9.7%। दैट मीन्स 10% ऑलरेडी नॉमिनल है। तो 4 ट्रिलियन है तो 4.4 तो इस बार होना ही है, नेक्स्ट टाइम 4.8 होना ही है। इस वाले ईयर में भी हो रहा है। दैट मीन्स कि हम 28 तक 5 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे, शायद से पहले पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये कहना कि 5 ट्रिलियन कैसे होगा, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कैसे हम इसको इंक्लूसिव कर सकते हैं और कैसे इसको सस्टेन कर सकते हैं, और इसी मोमेंटम को नेक्स्ट 20 ईयर्स और 25 ईयर्स में, उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर वाइज हम बात करें यहाँ पर, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमें क्या करना है। एग्रीकल्चर की प्रायोरिटी है समय सस्टेनेबिलिटी। कल बहुत अच्छा, अगर आप स्टूडेंट पढ़ेंगे तो नाबार्ड का बहुत अच्छा समिट हुआ है रिगार्डिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर, बहुत न्यूज़पेपर में आया है आज उसके ऊपर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कैसे मेंटेन करें हम लोग। तो वी नीड अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे 40-50% फार्मर्स का लेवलीहुड वहाँ से आता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहिए हमको यहाँ पर। सेकंड पॉइंट जो एग्रीकल्चर में है वो है मार्केट, लैंड टू मार्केट, प्राइस मिले किसानों को। तो जो हमारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग एमएसपी गारंटी को लेकर, उस पर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर को रीथिंक करना होगा कि कैसे हम अपने फार्मर्स को बेस्ट प्राइस दिला सकें, मे बी लीगल लॉ बनाकर या एक प्रॉपर सप्लाई चेन को क्रिएट करके। तो सेकंड काम को करना होगा, मार्केट रेटेड करना होगा फार्मर्स को। थर्ड जो मुझे लगता है अपने किसानों के लिए हमें करना चाहिए, किसानों को इनोवेशन से जोड़ना होगा। सस्टेनेबल फार्मिंग कर रहे हैं, बट इनोवेशन से जोड़े बिना, टेक्नोलॉजी दिए बिना, हम उनसे उम्मीद करें कि नेक्स्ट 30-40 ईयर्स में, जो मैंने पूछा था कि स्टूडेंट से 25 ईयर्स का प्लान क्या है, एग्रीकल्चर में 25 ईयर्स में अपने किसानों को इनोवेशन में जोड़ पाए, R&D से लिंक कर पाए। अपने फार्मर जो साइंटिस्ट हमारे लैब में तैयार कर रहे हैं, लैब टू लैंड को हम मोटिवेट कर पाए, ये हमें करना होगा एग्रीकल्चर के लिए। तो इन एग्रीकल्चर वी नीड 3 पॉइंट्स, सस्टेनेबल फार्मिंग, मार्केट रिफॉर्म एंड इनोवेशन। 3 थिंग्स फॉर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट मूव टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे हम लोग आते हैं, तो इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ सस्टेन करें और हम इसको बढ़ा पाएं। और मुझे अभी मैम ने भी कहा बीच में 25% अगर अचीव करना है हमको मैन्युफैक्चरिंग का, तो फॉर इंडस्ट्री बढ़े नहीं, केवल इंडस्ट्री हमारी जॉब क्रिएटेड हो। तो जॉबलेस या लेस जॉब ग्रोथ जो बोलते हैं हम लोग, उसको स्विच करना होगा। दैट्स व्हाई वी नीड अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। AI बेस्ड इंडस्ट्री आ रही है, बट लेबर इंटेंसिव बेस्ड, लाइक लेबर इंटेंसिव कहाँ हो सकती है लेबर, फूड सेक्टर, मे बी टेक्सटाइल सेक्टर, मे बी हमारा लेदर सेक्टर, मे बी हमारा आप जो सकते हैं इसमें लाइक MSME सेक्टर, जहां पर आपको जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो वी नीड अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री फॉर इंडिया फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। जो चीन ने किया 2000 से लेकर 2010-15 तक, वो हमें करना होगा नेक्स्ट 15 ईयर्स। हमें दूसरा काम करना होगा इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री में इसके अलावा और क्या करना होगा सर, हमें इंडस्ट्री फोकस होगा, लेबर इंटेंसिव, देन इंडस्ट्री में निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए, तो वी नीड इन्वेस्टमेंट रिबेट देनी होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना होगा, लीगल रिफॉर्म करने होंगे। अभी बीच में डिस्कशन से लीगल रिफॉर्म चाहिए हमें। इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एक्ट है, अब मल्टीपल एक्ट, हमें जो 3rd-4th जनरेशन एक्ट रिफॉर्म कहते हैं हम लोग, जो स्टार्ट किए थे मनमोहन सर ने 91 में, उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना होगा। और वी नीड अ 3rd और 4th जनरेशन रिफॉर्म करने होंगे हमें LPG एरा में। तो हमें एक्ट में रिफॉर्म करना होगा, लीगल सिस्टम में रिफॉर्म करना होगा फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री होने के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्री की मैं बात करूं, इंडस्ट्री में एक और चीज हमको चाहिए, इंडस्ट्री को जरूरत है लेबर स्किलफुल हो। तो हाई एंड टेक्नोलॉजी आ जा रही है, उनके लिए स्किलफुल लेबर चाहिए। सो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री और गवर्नमेंट मिलकर जो PPP मोड है फॉर स्किल डेवलपमेंट, जो भी आ भी गया है, इवन इस साल के बजट में हम देख रहे हैं, बहुत सी बात कही है, PM इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च किया गया है, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम के अलावा भी, जहां गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इंडस्ट्री के साथ मिलकर हम स्किलफुल कर पाए
इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग, ये फोकस करना होगा। इंडस्ट्री के बाद हम मूव करें सर्विस सेक्टर, जो मेजर सेक्टर इकोनॉमी का, उसको बड़ा सेटबैक लग रहा है ड्यू टू दिस एआई एंड टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन। तो हमें सर्विस सेक्टर में क्या करना होगा? सर्विस सेक्टर में हमारा बीपीओ सेक्टर, हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बना रहे मेजोरिटी में, इसके लिए हमें अपने यहाँ पर स्किल को रीस्किल करना होगा। हमें अपने यहाँ पर एक्सीलेंस ऑफ सेंटर स्थापित करने होंगे, जो हमारे स्किल्ड एआई में, हमारे यहाँ पर आईओटी में या फिर क्वांटम में, ये इन टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, वहाँ स्किलफुल कर पाए हमारे लोगों को। तो वी नीड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चाहिए हमको यहाँ पर एआई की फील्ड में। इसके अलावा हमें टाई अप करना हो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो ऑलरेडी एआई में अच्छा कर रहे हैं, मे बी साउथ कोरिया, मे बी चाइना, मे बी जर्मनी, मे बी यूएस। टाई अप करना होगा, सर्विस सेक्टर का मोमेंटम बनाए रखने के लिए होंगे। इसके बाद इंक्लूसिव करने के लिए इस पूरे काम को वी नीड फोरकास्ट, जो निर्मला जी ने साल के बजट में कहा था, फोरकास्ट इन इंडिया, फीमेल, लेबर, हमारा जो यूथ है, फार्मर है, और जो हमारी लेबर है, इन चारों पे फोकस करना होगा हमें। जो हमारा पुअर है, चारों फोकस करना होगा। तो किसी ने मुझे कहा बीच में, यहाँ पर बताया था शायद मुझे किसी ने, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑफकोर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़ा विमेंस को जोड़ने के लिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑलरेडी थोड़ा सा डिक्लाइन रेट पर है, हमें इसको इम्प्रूव करना होगा। विमेन एजुकेशन को, विमेन को मिनिस्ट्री में और जॉब क्रिएशन करने होंगे, उनकी कंडीशन के मुताबिक जॉब क्रिएट करने होंगे। तो विमेन को जोड़े, तो 4 सेक्टर्स के अलग बोल सकते हैं हम चारों को। फॉर यूथ के लिए क्या करना होगा, फॉर फार्मर्स के लिए क्या करना होगा, एंड फॉर जो पुअर है उसके लिए हमें क्या करना होगा। और सबसे बेस्ट मैं बोलता हूँ इसके थोड़ा सा बच्चों को, सभी बच्चों के लिए फीडबैक है ये, एक बार बजट पढ़ लिया करें। आप कोई भी बोलने जा रहे हैं उससे पहले बजट से पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट के बहुत अच्छे इनिशिएटिव मिल जाते हैं, बजट पढ़ने में हार्डली 20-25 मिनट लगेंगे आपको। आपको अपडेटेड मिलेगा पूरा गवर्नमेंट ने क्या किया है। अब वहां चालू करें कि जो गवर्नमेंट का बजट है वो 5 ट्रिलियन का ही है, गवर्नमेंट का बजट डेवलप इंडिया का ही है। तो उसको अगर पढ़ के आप जाएंगे तो वेल वे आपके पास होगा, बोलने का तरीका होगा, आपके पास पॉइंट्स होंगे, उनको मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, 5 ट्रिलियन के अलावा बात करें डेवलप इंडिया की बात में करूँ, तो मुझे लगता है कि इन चारों में एक लास्ट डॉक्यूमेंट में जोड़ना चाहूंगा नीति आयोग की रिपोर्ट ऑन पॉवर्टी एलिवेशन। क्यों जरूरी है? नीति आयोग बहुत जो बात कह रहा है कि गरीबी कैसे कम होगी, हमारे यहाँ कैसे डेवलप इंडिया बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ डेटा एक्यूरेसी, जो इंडिया में बहुत कम है। हमारे यहाँ नीड डेटा, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में विदाउट डेटा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक्यूरेट डेटा चाहिए हमें, टाइमली डेटा चाहिए हमको, जो हमारे पास नहीं है। तेंदुलकर कमेटी के बाद पॉवर्टी डेटा नहीं आया, बोस कमेटी फेल हो गई, लगातार कमेटी फेल होती गई बैक टू बैक ड्यू टू लैक ऑफ डेटा। तो वी नीड अ कंप्रेहेंसिव डेटा बेस मैनेजमेंट फॉर आवर पॉवर्टी एलिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर गरीबी दूर करनी है तो फोकस करना होगा मोर एमएसएमई, ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि हमें जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उनको लोगों तक लेके पहुंचना होगा। तो सोशल वेलफेयर स्कीम में जो भी गवर्नमेंट की मनरेगा है, गवर्नमेंट की आवास स्कीम है, जो भी डिफरेंट स्कीम गवर्नमेंट की चल रही है वेलफेयर स्कीम, उनको लोगों तक पहुंचाना होगा ट्रांसपेरेंट वे में। और हम ये 3 काम कर पाए, डेटा एक्यूरेसी, एमएसएमई एंड वेलफेयर स्कीम, तो नीति आयोग कहता है कि हम लोग आने वाले 10 to 20 ईयर्स में इंडिया पॉवर्टी खत्म कर पाएंगे और इंडिया को डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में ला पाएंगे। तो 2-3 डॉक्यूमेंट हमेशा बोलता हूँ इसके लिए, नीति आयोग की रिपोर्ट हो गया, बजट हो गया, इसको स्टडी कर लिया जाए तो आपको बहुत बड़ा फीडबैक मिल जाता है कि क्या बोलना है मुझे। और एक बार लास्ट फीडबैक सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी की बात करूँ, शायद मैं किसी को छोड़ रहा हूँ तो थोड़ा आप जो फैक्ट बोले सोच के बोलिए, नहीं आता सॉरी टू से, बट एक एक जानने वाले को फैक्ट गलत बोलना अच्छा नहीं लगता है। किसी ने मुझे बताया बीच में कि हमारा टारगेट रिन्यूएबल का है 450 गीगावाट, प्लीज रीड केयरफुली, 500 का है। पंचामृत जो हमने लॉन्च किया 22 में, 500 गीगावाट बाय 2030 हमें अचीव करना है। बहुत सारे फैक्ट मिस हुए मुझे लगता है, वो ठीक है, उसको मैं मानता हूँ पार्ट ऑफ हो जाता है, बोलते समय चीजें मिस हो जाती हैं, लेकिन अगर बार बार रिपीट किया जाएगा तो मुझे लगेगा। इसके अलावा किसी ने कहा कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, मुझे डाउट है, क्योंकि 37% हुआ है ड्यू टू कोरोना। महिलाओं को ज्यादा वर्कफोर्स में शामिल हुई है महिलाएं, तो बढ़ गया है वो थोड़ा सा। हाँ, एक आध साल में भी कम हुआ, लेकिन जो ओवरऑल जो एस्पेक्ट आया है लास्ट 5 ईयर में, फीमेल लेबर फोर्स जो 20% था 37% पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि उस पर एक बार हमें देखना होगा। इसके अलावा डेटा वाइज तो ठीक है, डेटा तो हो जाते हैं सही, इसमें इशू नहीं है। जो अभी हमारे साथ सर थे, उन्होंने भी कहा कि एक चार्ट हो आपके दिमाग में, पॉइंट्स हो आपके बोलते समय, कि आप जो बोल रहे हैं फ्लो में हो चीजें, हमेशा आपको लगना चाहिए आप बोल रहे हैं वो एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री का ये, सर्विस का ये, इकोनॉमी ऐसे आगे बढ़ेगी हमारी। क्लियर थॉट ऑफ प्लान हो, कम बोलिए लेकिन क्लियर थॉट ऑफ प्लान के साथ बोलिए कि मुझे ये बोलना है। उसके लिए जितना अच्छा राइटिंग वर्क होता है, आप जो मेंस क्वालिफाई करते हैं बच्चे, राइटिंग वर्क करते हैं, उतना अच्छा उनका बोलने के पॉइंट्स भी होते हैं। क्लियर होना चाहिए थॉट प्रोसेस में। बाकी सर मेरी तरफ से यही फीडबैक है स्टूडेंट के लिए। बाकी परेशान मत हो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक दो मिस्टेक होती रहती हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता है, बट बार बार फैक्चुअल मिस्टेक करो, उससे बेहतर ना करें। अनिल सर, दिस फ्रॉम माय साइड, तो जोड़ना चाहते हैं सर? थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। यस हाँ प्लीज।
हाँ नितिन सर, आप पूछिए। Hello. Yes, sir. Nitin sir. Thank you, Ashirwad sir. So vital points have been shared by Ashirwad sir and Manish sir, I think. So we have to pay attention to it, है ना? जो भी चीजें कही गई हैं, राइट डाउन प्रॉपरली एंड अगेन एक बार उस पर ग्लांस करें कि क्या क्या चीजें हैं। मनीष सर ने कहा था कि टू दी पॉइंट बोले, एक्शनेबल पॉइंट्स बोले, ठीक है, अननेसेसरी स्टफ्स नहीं बोले। व्हाट आई वाज ऑब्जर्विंग, पहली चीज कि ऑल ऑफ यू हैव डन वेरी वेल, मतलब आई हैव सीन योर ग्रोथ। जो लोग भी आज पार्टिसिपेट किया है, जिन लोगों ने, कुछ नए लोगों ने भी किया था, अमान हैज स्पोकन वेल, सो एंड हु हैज बीन पार्टिसिपेटिंग रेगुलरली, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक चीज आई एम फिगरिंग आउट कि रिपीटिशन हो रहा है और स्ट्रेच करके हम बोल रहे हैं, थोड़ा लंबा बोल रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वी नो द इन्फॉर्मेशन, आप भी जाने से शाश्वत हैं, सोनिया मैम है, एंड देन सुधांशु ऑल्सो, यू नो द फैक्ट, डेप्थ भी अंडरस्टैंडिंग है, बट जैसे अभी आशीर्वाद सर ने कहा कि एक्शनेबल होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, क्रिस्प। इससे होता क्या है, द इंटरव्यू रिमेन्स इंटरेस्टिंग। इफ यू स्ट्रेच टू मच, थोड़ा सा आपके थोड़ा सा फेवर में फिर नहीं जाती चीजें। सो दीज आर द थिंग्स, वाइटल थिंग्स हैव बीन सेड। रेस्ट कुछ और इनपुट होगा तो आई विल बी। राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं सर? राहुल जी सर, हाँ राहुल कुछ कहना चाह रहे थे। राहुल आप बताएं। Yes, sir. My question was to Ashirwad sir that what was the invisible hand that was played by Nirmala Sitharaman? सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी, रिपीट अगेन। हम लोग मानते थे, जो अर्ली एडम स्मिथ थ्योरी चलती है वहीं से चलता है कॉन्सेप्ट ही। एडम स्मिथ कहते थे कि गवर्नमेंट को सब कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा बिजनेस में हटना चाहिए, गवर्नमेंट ही सब कुछ सपोर्ट करे। तो इनविजिबल हैंड है यहाँ पर जो प्राइवेट हैंड है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, आजकल नया वर्ड है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बट ये मोड है, ये बुके ऑफ इकोनॉमी इन द टू हैंड्स, वन इज गवर्नमेंट हैंड, वन इज इनविजिबल हैंड। और इनविजिबल हैंड हमारे यहाँ पर जरूरी है क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसी आता है। तो एक फ्रेज है बस, इनविजिबल हैंड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो नथिंग इज नया कुछ भी नहीं है, 2 साल चल रहा है वर्ड है हमारी इकोनॉमी के अंदर, इनविजिबल हैंड नोन एज प्राइवेट हैंड। तो इन इंडिया पर्टिकुलरली तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑफ कोर्स मार्केट बेस्ड डिसीजन मेकिंग ना। तो प्राइवेट प्लेयर आएगा तो मार्केट बेस्ड करेगा, सोशल वेलफेयर की बात नहीं करेगा वो। तो वी नीड अ सोशल वेलफेयर विद गवर्नमेंट एंड मार्केट वेलफेयर, और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी विद प्राइवेट निवेश। तो ये दैट नोन एज टू हैंड इन इकोनॉमी, वन इनविजिबल हैंड कहते हैं इसको हम लोग। ये पुरानी फिलॉसफी है, मतलब ये। एक से मेरा प्रश्न Thank you, था, sir. एक से मेरा प्रश्न था इसमें, बस 1 मिनट का मैं रुकूंगा। कि अभी आपने कहा कि हमारी जो ग्रोथ के लिए हमको लेबर, चूंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत सारा यंग है, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़ा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ हमारा है, ये बहुत बड़ी क्राइसिस हो सकता है बाद में भविष्य के लिए। तो इसको हम लोग कैसे इसको यूटिलाइज करें, इसके लिए हमने पहले एक लिखा था, एक मैंने बनाया था इसके लिए चार्ट, कि अगर हम जो लेबर बेस्ड जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, वो सबसे बढ़िया होता है सर कृषि क्षेत्र। अगर हम, आपने कहा टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग अपने गांव की तरफ ले जाएं, कृषि की तरफ ले जाएं, और अपने वहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ पे बच्चों को हम लोग ट्रेंड करें, वहाँ के यूथ को ट्रेंड करें, उस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड करें, और फिर उसमें हम अपना उनको लगाएं। इसमें हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है दुनिया भर का, इसमें मैंने बनाया था इसमें, कि इसके माध्यम से एक कोऑपरेटिव सिस्टम बना करके उनको हम लोग वहाँ पे बना करके एक, जैसे 5-10 जिलों, 10 मतलब ब्लॉक्स का, इसका सबका गाँव का एक बना ले, अपना एक एरिया बना ले कि हाँ इस क्षेत्र में क्या पैदा होता है। उस क्षेत्र में, ये हमारी देश की विविधता है, विशेषता है कि हर 5 मतलब 5-5 के पे गोली बदले, 7 को उसमें बाड़ी, ऐसे कुछ करके है। तो जितना जहाँ-जहाँ पानी बदलता है वहाँ पर कुछ विशेष पैदा होता है। तो उस क्षेत्र को हम लोग विशेष करके अपना एक बना करके सिस्टम, वहाँ पर जो विशेष पैदा होता है उसको उसको मतलब एक अच्छे कमर्शियल उसमें करने के लिए वहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और वहाँ पर उसका ट्रेनिंग करावें, ट्रेनिंग करके स्किल फुल करें बच्चों को, और फिर वहीं पे उनका उद्योग लगाएँ उनके बेस पे। तो हमारे ख्याल में ये जो हमारा एक तो लेबर, हमारा जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है उससे वो भी कवर होगा। लेबर बेस्ड तो हमारी इंडस्ट्रीज़ पैदा होंगी जो एग्रीकल्चरल होंगी, क्योंकि बाहर तो अब तो एआई आ रहा है। एआई है, ये सब दुनिया भर के आकर के मशीनों ने हमारा कब्जा कर लिया है, उसमें बहुत कम हो जाएगा।
हमारा जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे बहुत जो हमारा जो कहते हैं ब्रेन वाला जो सिस्टम है, जो प्रोफेशनल हमारी जो अपना ये है कि इंटेलेक्चुअल जो हमारी प्रॉपर्टी है, वो तो बहुत हाई चली जाती है, लेकिन जो लोअर वाली प्रॉपर्टी वो बहुत ज़्यादा उसकी संख्या है। उसका रेशियो समझिए कि 80-20 का है उन लोगों का। 80% हमारी जो पॉपुलेशन का है वो लोअर वाली जो लेबर फोर्स के रूप में है, और 20% हमारी मात्र उसमें है। तो 80% को अगर हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, यूटिलाइज नहीं करते प्रॉपरली, तो ये हमारी एक डिजास्टर हो सकता है भविष्य के लिए, आज नहीं तो कल ये इसकी संभावनाएं हैं। इसको हम लोग अगर इसमें ले चलते हैं तो एक अच्छा ये आइडिया हो सकता है। मेरे मन में था ये, बहुत पहले मैंने इसको सुझाव भी दिया था। तो बिल्कुल सही अनिल जी, बात है मैं सर। 2 ये चीजें ऐड करना चाह रही थी, कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ श्योर। जी। आ, बस 2 बातें बोलनी थी कि जब हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी पे चर्चा हो रही है, आंकड़े होना चाहिए और हमेशा एविडेंस होना चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फैक्ट्स उड़ेल दिए जाएं। जैसे जब हम बोल रहे हैं तो हम आज जो हम कह रहे हैं उसको कोरोबोरेट करने के लिए, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि उसको एविडेंस के तौर पे कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ऐसा हम मेंस में भी ऐसा नहीं करते ना कि राइट अवे जितना आता है सब उड़ेल दिया अर्थव्यवस्था के बारे में। तो बोलते समय तो ये बहुत ही बोरिंग लगता है। मान लीजिए मैं इंटरव्यू पैनल नहीं हूँ, मैं एक लेमैन हूँ, उसको भी सरल शब्दों में कैसे समझाएंगे? तो आप कुछ एक एक बोलेंगे, उसके बाद एविडेंस के तौर पे आंकड़ा बोलेंगे। तो ये चीज मैं सभी से कहना चाहती हूँ। मैंने सुधांशु की बातचीत में देखा शुरू में कि वो काफी आंकड़ों का इस्तेमाल अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो गलत तरीके से कर रहे थे, तो इसका ध्यान रखें। आई थिंक जब आप ये मेंस की तैयारी, अदरवाइज भी जब अखबार पढ़ते हैं या बातचीत करते हैं, तो इसको आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपका इन जनरल बोलने का तरीका बन जाएगा कि हम आंकड़ों से किसी को ओवर पावर नहीं कर रहे, रादर उसको असिस्ट करने के लिए, राइट? एक ही चीज। दूसरी चीज, जब हम बोल रहे होते हैं तो हम धीरे बोलें, ताकि सामने वाला, वही दोनों चीजें जुड़ी हैं शायद, कि आप जो आंकड़े रख रहे हैं उसको किस जगह पर रख रहे हैं और किस किस्म से रख रहे हैं। आपका जो पॉइंट्स हैं वो कितने पॉइस के साथ रखा गया है ना। और तीसरी चीज, आई थिंक ये यूपीएससी प्रिपरेशन या का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, कि हम जब बोलने वाले हैं उसके पहले इधर स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए। आई थिंक वो जो 30 सेकेंड रूल मेंस के पेपर में भी होता है, 1 2 3 4। तो जैसे आशीर्वाद सर ने जब वो पूछा था ना कि प्रायोरिटी क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये ही प्रायोरिटी इस टॉपिक पे सोचने वाले हर इंसान के मन में शुरू से होनी चाहिए। तभी हम हमारी समस्याओं का समाधान होलिस्टिक रूप से एक देश के तौर पे कर सकें। ये मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, ma'am. I will improve upon it. Adding on to that, one more thing that I observed यार कि ना सिमिलरली जो स्पर्श मैम ने ना जो चीज को इंगित किया है कि when you know too much fact, तो one problem that I noticed when there were two questions, मतलब two parts of the question generally asked by स्पर्श मैम, तो पहले क्वेश्चन के फ्लो में ऑल ऑफ मतलब जिनसे जिनसे उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, दे वेंट विद द फ्लो ऑफ दैट क्वेश्चन और सेकंड पार्ट भूल गए या उस पे ही दे स्ट्रेस टू मच। सुधांशु आपके साथ भी हुआ, सोनिया मैम के साथ भी हुआ, दे मिस्ड। तो हो सकता है कि वहां पर दो क्वेश्चन हो, सब पार्ट हो, एनीथिंग कैन हैपन। और वो कैसे कैसे क्लियर होगा? व्हेन यू नो व्हाट यू हैव टू स्पीक। तो उसके लिए हियर पहले यहाँ पर द थिंग्स शुड बी क्लियर। जब आप एड्रेस कर रहे हैं तो बैक एंड पे इमेज चलनी चाहिए कि ना आई एम स्पीकिंग दिस, एंड व्हेन यू कट पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन तो फिर वो कहना है ना, तो दैट लुक्स गुड आल्सो एंड यू आल्सो डू नॉट लुक कंफ्यूज्ड। ठीक है, वेरी नाइस। ओके सर, थैंक यू सो मच। कैसा रहा आप लोगों को? ठीक लगा? इम्प्रूवमेंट के लिए आपको लोगों काफ़ी कुछ इसमें यहाँ से दिया गया। आप एक से एक आज एक्सपर्ट्स हमारे साथ थे, और मैं किन शब्दों में आप लोगों को धन्यवाद बोलूँ? और सबसे पहले, अब सबसे अंत में और सबसे पहले मैं बात मैं करने जा रहा हूँ कि आज हमारा क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस है और विवेकानंद जी की जयंती है। राष्ट्रीय युवा दिवस और विवेकानंद जयंती के बीच में एक तालमेल क्या है? ये लोग क्यों कहते हैं कि हम विवेकानंद जयंती के दिन ही राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाते हैं? एक प्रश्न उठता है, विवेकानंद जयंती के दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं? जो मैंने अब तक सोचा समझा पाया वो ये था कि विवेकानंद ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने अपने यौवन का भरपूर प्रयोग किया। अपने यौवन को उन्होंने देश और संसार के भलाई के लिए लगा दिया। उन्होंने अपने यौवन को सार्थक कर दिया। हम सभी लोग यहाँ पर उसी अवस्था में हैं, ऑलमोस्ट आगे पीछे।
तो हमारा आपका जीवन भी, अगर हम लोग विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं, हम तो अक्सर देखते हैं ना बच्चे अपना आदर्श की एक फोटो एक विवेकानंद की लगाए रखते हैं। तो अगर हम विवेकानंद के को अपना आदर्श मानते हैं, जो भी हमारा आदर्श होता है, तो उसके जो जीवन रहस्य हैं या जीवन का अनुभव का जो उनसे जो लर्निंग्स हैं हम लोगों को, वो अपने जीवन में उतारनी पड़ी चाहिए। ये विशेष रूप से आप लोगों से कहा कि आप लोग सभी लोग युवा हैं, अपनी युवा शरीर से शारीरिक ऊर्जा तो है ही आपके अंदर वैचारिक ऊर्जा भी है, आपके अंदर एक गंभीर चिंतन भी है भविष्य को लेकर के, बड़ा सभी आगे आपको बहुत बड़ा रास्ता तय करना है। इस देश को आगे ले जाना है, देश को कहाँ से कहाँ ले जाना है। अभी 7% हम लोग अभी तक हमारी मानसिक प्रगति हो पाई है, हमारी जो भौतिक मानसिक प्रगति जो हमारी थी वो हो पाई है। 93% अभी भगवान ने छोड़ रखा है आप लोगों के लिए, जो आप और आपकी आने वाली पीढ़ी को इसको अचीव करना है, अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करने की बात। तो हम सब युवा, हमारे जो युवा हैं, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं, वो सब इस 93% के चैलेंज को कैसे लेती हैं, ये देखने वाली बात है। हमारा समय सदैव आगे बढ़ता रहता है और समय के हर बार पर, हर कदम पर, हर कुछ समय के बाद, जैसे हम लोग नदी चलती है वहां से ऊपर से कैलाश से गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते तमाम तरह के बांध बनाए जाते हैं, और हर बांध के साथ में क्या होता है, तमाम परियोजनाएं बनाई जाती हैं, विद्युत की परियोजना बनाई जाती हैं, सिंचाई की परियोजना बनाई जाती हैं। क्या होता है, उस एनर्जी को एक बांध के माध्यम से, उस शक्ति को हम लोग कल्याण में लगाते हैं। तो ऐसे ही इस समय की जो धारा चल रही है, इस समय की धारा को जगह जगह रोक करके विशिष्ट शक्तियां आती हैं और लोक कल्याण के काम करती हैं। आप लोग भी एक ऐसे ही एक अच्छे बांध बनिए इस समय की धारा में। आपके माध्यम से लोग समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, समय का कल्याण हो। उस समय को जैसे विवेकानंद के उस काल को विवेकानंद का समय मानते हैं हम लोग, वैसे ही आपके भी इस काल को आपका काल माना जाए, इस समय आपके नाम से जाना जाए। ऐसी हमारी सबसे हमारी शुभकामना है और अपेक्षा भी है। अपने जीवन को, अपने यौवन को जो सफल बना लेगा, समझिए उसने ही इस जीवन को सफल बना लिया। थैंक यू सो मच। और आगे आने वाले समय में अगली बार हम लोग एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो है उसका कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट संडे को राइट टू प्राइवेसी रहेगा। जो कन्वीनियंट टाइम आप लोगों को हो बता दीजिएगा, राइट टू प्राइवेसी रहेगा। और इस पर अभी बिल आने वाला है, 18 फरवरी बाद इस पर बिल आएगा। अभी इस पर जनमत संग्रह चल रही है, सबकी राय ली जा रही है। राइट टू प्राइवेसी है, और एक डेटा की प्राइवेसी जो है, इस पर भी इसमें सब कुछ है। मैं उसमें अभी ग्रुप में वो लिंक डाल दूंगा, आप इसको स्टडी कर लेंगे। ये आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आवश्यक है। और नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग इस पर शाम के समय या जैसे भी समय रहेगा, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को युवा दिवस की मंगल कामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।